question is about what has been asked by Tejasvi Yadav, that Nitish Kumar is not being treated well within the NDA and he has not been announced as the chief ministerial face. That in case if the NDA forms the government, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे. देखिए, ये जैसे सूरज का उगना तय है ना, वैसे ही नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनना तय है. ये लोग जिस तरीके से ईबीसी पे बात कर रहे हैं, ईबीसी के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपमान करने वाले लोग कौन हैं? वही कांग्रेस के और वही आरजेडी के लोग हैं. जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार विधान परिषद में आना चाहते थे, बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष शिवानंद पासवान जी ने कहा, जब कर्पूरी ठाकुर जी ने उनसे आग्रह किया था तो उनके जीप में तेल नहीं थी, तो लालू प्रसाद यादव जी को उन्होंने फोन करके कहा कि मेरी जीप में तेल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते हैं, तो इतना दिन आप मुख्यमंत्री रहे हैं. लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अगर कोई विरासत को बिहार में इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी. नीतीश कुमार जी ने ही, आपको शायद नहीं पता होगा, मंडल कमीशन के रिपोर्ट में भी लालू प्रसाद यादव जी ईबीसी का कोई कैटेगरी नहीं डालना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के जीत के कारण उनको बिहार में कैटेगराइज करना पड़ा. और आदरणीय नीतीश जी ने जिस तरीके से सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जिस तरीके से एम्पावर किया है, बैकवर्ड क्लासेस विद इन द ओबीसी was a constituency created by Nitish. Yes, precisely. It was a constituency created by Karpuri Thakur based on Mungeri Lal Commission, That's right. Nurtured and consolidated by Nitish Kumar in 1990s. Yes, please pass on the mic. Yes. In fact, today also if you see Prime Minister's speech, what he said in Samastipur, उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि नीतीश जी के लीडरशिप में ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दैट क्वेश्चन नाउ अब तो ये बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं रह जाता है. उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया इस बार कि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं और वही चीफ मिनिस्टर होंगे. Well, it is very sad to tell again and again that they are saying that the Nitish Kumar will lead the Gathbandhan. That is the same thing happened in the Maharashtra, and you see what is the result of Shinde ji. So these people are, they say, now have declared the face of the Mahagathbandhan as a CM face. Where is the NDA CM face? And now you're talking about the EBC. What EBC you're talking about? The Jan Kapuri Nayak Thakur, when he has a majority of the government, only 22 months he has run, and who has let down that government? That Jan Sangh and this party have been taken out the majority, and the government has been collapsed. And these people are talking about the respect given to the Jan Kapuri Thakur. I again repeat that these people are not ever supported the EBC. But one moment. One moment. Gyan Ranjan ji. My question is simple. That you were in power for close to 7 decades. Yeah. Did you ensure that Jan Nayak gets a Bharat Ratna? See, this is what I'm trying to say here. See, when the country got independence, 1947, what do we had? We have the main focus how the Bihar moves, and that's the second. I'm telling you. Can I I'm coming to the point. Doesn't hold. They are Doesn't also doing- hold at all. No. You What were is in required power there? for you were Can I in just add power for something? 6 decades. Let me give you the answer. Let me give you the हाँ answer. ठीक है, जवाब दे दीजिए. एक Let मिनट me रुकिए, give you एक the मिनट answer. रुकिए. हाँ Please allow me to सुन speak लीजिए. at हाँ least. बोलिए. See, what is required that time? हाँ. When our India got freedom, this Bihar itself has got the 5th Emission Commission and raised the industrialization policy. This Bihar was 27% sugar factories, sugar cane production was giving. That you are focusing on the empowerment and economic growth of the Bihar, and that to lead to the country. Even the Home Karpuri Minister, Thakur वाला question आपने answer Sardar नहीं Patel किया. has, please don't disturb me, please behave. That question So is the not- One moment, I'm Sardar coming to Patel clearly see that the Bihar is one of the growing state and very ahead in the country. What happened? And these people only blame things. Do you know the actual basic? The same thing happened in the 1990 when there was the BP Singh government, when they declared the Mandal Commission that this RSS has and BJP has taken the majority from that support from the government, and government toppled down. They are never doing that, and they But only Gyan make Ranjan ji, false you have promises. not answered my question. See, I answered that. If What it is see, about the it is fight never too for late. Karpuri No, Thakur's it is never legacy, too late. See, it is never it too is- late no, for no, no, anything. one We have moment. supported it, One and we are moment. proud of it that Kapuri Thakur has done a lot of things from where all the parties are now focusing on their Okay, views fine, and ideology. fine, Can I fine. add something? Yes, please. इनफैक्ट जन नायक का नाम भी वो लोग चुरा रहे हैं. मतलब राहुल गांधी को भी जन नायक बोल रहे हैं, तो टाइटल चोर भी हैं. They do not have any locus standi when they talk about it. See, look at the comparison.
you are comparing Nitish ji with a family which is known as a Nepo family and a corrupt family. Recently, he was, 2 cases have been put against him. And you are comparing, this Toot Bandhan with NDA government with a track record of Nitish ji and BJP. See, I can give you one small data, so you will get shocked. From 1980 to 1990, Bihar's per capita income was 10,000. That was constant during Congress regime. Then from 1990 to 2005, it came down to 7,000. And then in 2000, grandly, it became 12,000. From 2005 to 2025, from that 12,000, this is 66,000. That is the legacy broken Bihar they have given. Manish ji, the problem is that all of you keep talking about these numbers, which technically make no sense in the context of Bihar, because Bihar has to grow in comparison to other states. I humbly While disagree with you on that. other states have grown and developed at a much faster pace, Bihar has not. Can I add sir. on I this? will not give you any reason for giving me Can I a put data which is completely skewed. No. Don't give me data I which is disagree with completely you. skewed. This Pass on the is mic to not him. the right kind of assessment No, from yours. I'm Last making year the also right Bihar- assessment. No, it's a wrong assessment. You अगर cannot जीरो just से 1 spread पे पहुंचा रहे हैं और आप लोग falsity. बार-बार अरे जीरो से 1 की one बात नहीं है ना। comparison कर रहे हैं। आप पिछली बार तमिलनाडु के बाद Bihar was second in GDSP. What kind of data you are giving? चलिए। That's very One false. moment, go ahead. And One very unfair moment. on your part. One moment. For last My- 5 years, Bihar has been in top 4. Yes, what are you very talking? good, sir. Please do not talk about Multi-dimensional this. When you poverty. talk, Multi-dimensional GDSP, poverty. we can talk about that. Multi-dimensional right? See the kind poverty. of growth rate Other they have put social in, parameters. and then you are talking about Other this. social parameters. Other social parameters Okay, also one Bihar moment. is doing Yes, pretty please. well. I think Go that ahead. requires a different that's, debate that's on that. absolutely, so please do not give that kind of data. absolutely, it is not expected from absolutely farcical argument. being No, it given is by not here. farcical. Utpal I ji, think go you ahead. have lacked My- understanding when it अभी comes जैसा to my economic question data. is, my question is that yesterday came the announcement of course, Mukesh Sahni as the Deputy Chief Ministerial face. Now Tejasvi Yadav today has announced that there will be 2 more Deputy Chief Ministers. Is there a sense within the Mahagathbandhan that this announcement could impact only a very small percentage within the extreme backward classes? Because the Mallas and the Nishads are just 2.5 to 3% within the 36%. So it will not be like a pan movement. I mean, that will be limited to just that percentage within the larger EBC umbrella. देखिए, ये बात जो आप कह रही हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है कि ये मुकेश साहनी जी मल्लाह जाति से हैं। अगर वैसे आप बात करेंगे तो इस मामले में आपको कर्पूरी जी को नाई जाति और उनकी आबादी की प्रपोर्शनेट में उनको नेता बनाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्पूरी जी पूरे बिहार और देश के नेता थे और विशेष तौर पे उन्होंने जो वंचित समाज है उनके लिए काम किया, इसलिए हम लोग उनको मानते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा पे वो चले थे। तो कर्पूरी जी को आप ये तो इस आधार पर तो कर्पूरी जी को नाई का नेता कहेंगे, मैं नहीं मानता हूँ कि ये गलत होगा। और बता रहा हूँ कि चूंकि ईबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये राजनीतिक भागीदारी की बात है। लेकिन जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है तो जो लोग कह रहे हैं, मैं तो एक बार फिर वही बात रिपीट करता हूं कि सामाजिक भागीदारी उन समाज को आप शैक्षणिक तौर पे भागीदारी देना होगा, आर्थिक तौर पे भागीदारी देना होगा और राजनीतिक तौर पे भागीदारी देना होगा। अब ये कौन इनके खिलाफ है? जब मैं कह रहा हूं कि बढ़ी हुई आरक्षण की मांग, जातीय जनगणना के आधार पर बढ़ी हुई आरक्षण की मांग का क्यों नहीं आप मान लेते हैं, जिससे ईबीसी बड़े पैमाने पे है यहाँ पे, उन सारे ईबीसी के लोगों को मिलेगा। एक और मैं सवाल करना चाहता हूं, 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी जातीय जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट आया है उसमें ईबीसी के बच्चे महज 11% जो मैट्रिक पास कर सके हैं। मैट्रिक पास जो अभी बच्चे किए हैं जनगणना के समय में, वो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बिहार में जन्मे हैं। जो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में जन्मे, इसके लिए भी 70 साल पहले और 15 साल पहले के सरकार के लिए जिम्मेवार ठहराना अब कहां तक उचित है, यह बिहार और देश की जनता तय करेगी। अब ये जो 89% बच्चे जो मैट्रिक नहीं पास कर सके हैं, इसके लिए ये क्या कहेंगे? और उन सारी सुरक्षा को, शैक्षणिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए, जो मांग किए गए थे, उस पर क्यों ये लोग चुप्पी साधे हैं? क्यों इनके हकमारी कर रहे हैं? ये सवाल तो देना होगा। सिंबोलिज्म के राजनीति में नहीं चलेगा।